So now we are going for a short trip, and it will be from the beach side of Kannur towards the Western Ghats. गाड़ी में सामान रख देते हैं अभी। इसमें सारा मेरा कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बैग में है, एंड इसमें है मेरा DSLR, और एक चीज़ भी करना है गाड़ी का। हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी। देखिए पूरा ख़त्म हो गया। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं अननोन मंजिल की तरफ। तो गाइस हम लोग आ गए, ये है हम लोग का बासा जीवन से। इधर नहाने का बोले थे आप। So we have reached the waterfall at 29th and Elapeedika, which is located just before the Periya Tea Garden and the forest. After taking a few minutes of stopover beside the waterfall, we stopped at the Periya forest and tea garden and clicked few photos. Finally, we reached St. Catherine's Forange Church after crossing Mananthavady town and took a small tea break there. Full dose. After the tea break, we were about to move, but then suddenly this incident happened. Now we are almost 100 km away from the nearest food service station, so for the local mechanic to fix the problem, and till then we are going to visit a nearby place. पंद्रह मिनट और बैठने का तो जगह नहीं है, किधर बैठे? नहीं, इधर ही घूम के थोड़ा देखते हैं। Now we are returning back to my vehicle to see whether the mechanic has arrived or not. And he was able to identify the problem. Actually, the link were connecting the gear lever to the gearbox had been broken somewhere in the middle. The mechanic said we need not to worry, as it is a very common problem in most of the vehicles. He fixed the broken cable link just with a small piece of wire that he had brought with him. Although it was a very small problem, but the tension it gave was very big for us. खरीदने के लिए मैं बहुत बार सोचा था। हाँ, ये खरीदने के लिए मेरे पास है तो दो है। हाँ, 2 सेट है मेरे पास, 2 सेट है। 2 टाइप का। आप खरीदना तो बॉश का खरीदिए। बॉश का है ना? हाँ, बेस्ट। वो कन्नूर ये अपने फोर्ड का नंबर है। हाँ, फोर्ड का नंबर है तो उसको ये अपना गियर का केबल है, पूछो ना वहाँ।
With this temporary fix, the gear lever is working perfectly now, and enough of traveling for today. We'll be now going back home. नहीं है ना कुछ सोच भी नहीं मेरा बहुत सारा कैजेट लाया था छोटा एक ड्रोन है ड्रोन भी लाया था मैं ड्रोन उड़ाऊंगा अभी बारिश में ड्रोन ड्रोन उड़ाएगा इधर तो ड्रोन उड़ाऊंगा अभी सब सब वो वाला काट हो जाता तो ठीक नहीं होता ये अब ये अपना एक बार खरीदने के बाद है ना 70 में जाएगा ना तो अभी भी गाड़ी टेढ़ा ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बड़ी वही करते रहेगा सर बट वो दूसरा है ना ये कंपनी वाले को भी कोई कंपनी का गाड़ी का भी हाँ पोर्ट का भी रहेगा आसपास ये सब ना एक सब भी रहते हैं आसपास हाँ 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 We missed our lunch due to car problem, so supplementing it now with chicken roll and hot coffee as evening snacks. From Boys Town Junction, we turn right towards the Palchuram Falls, and we'll be taking this different route while returning back to Kannur again. So we have reached the Palchuram Falls area. The road here is quite steep with many hairpin bends. Elevation of the spot is approx 730 meters above sea level. There is heavy rain you can see. That is the portion of water can be seen which is coming out from the Palchuram Falls. And there is a river. The sound is coming, and that is cloud actually.
कितना मीटर ऊपर होगा ऊंचा?